Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. In the previous videos, we have done the chapter Reproduction in Plants. Now, it's time to do the nth exercise of this chapter. The very first question is fill in the blanks. The A part is production of new individuals from the vegetative part of a parent is called. जब एक नया इंडिविजुअल बनता है एक वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट के, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एक ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. Next, C part, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same plant or another flower. The same kind is known as pollination. Pollen grain का transfer हो रहा है, stigma पे जा रहा है, that is known as pollination. Next part, the fusion of male and female gamete is termed as. जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. E part, seed dispersal takes place by means of wind and water. I hope the first question is clear to you. Now it's time to do the second question. Describe different methods of asexual reproduction. Give examples. कौन से methods हैं asexual reproduction के? The first one is binary fission. As you all know that in binary fission, a single organism divides into two daughter cells, and they are totally identical to each other. It is known as binary fission. Now the next we have the fragmentation. Fragmentation means the body divides into two or three more parts, and each body part grow itself and leading to a new formation of a new organism, but this is also similar identical to the parent cell, so it is known as a type of asexual reproduction, that is fragmentation. Next we have spore formation. As I have told you, the spore formation is basically a kind of multiple fission in which the spores are formed in unfavorable conditions, having a thick wall, that is a cyst, which protects the spores in the unfavorable conditions known as sporangium, and under unfavorable conditions the heart covers broke. Under the favorable conditions the covering breaks and the spores are spread for germination. It is known as spore formation and it can be seen in rhizopus. Next we have the budding. Budding takes place in yeast, where an organism has a bud-like appearance attached to the parent body, and when this bud grows properly and matures, it gets detached from the parent body and then becomes a new independent individual, like in yeast. Next we have vegetative propagation, in which the plant parts, that is the vegetative part से एक new plant arise करता है. It is known as vegetative propagation. Next we have explain what you understand by sexual reproduction. Sexual reproduction क्या होता है? It is a kind of reproduction in which two parents are involved for the reproduction process. Here in plants we have male gamete and female gamete which fuse together to form a zygote. These zygote develops into individuals which are not identical to each other. As sexual reproduction includes two parents, so variations occurs. Therefore, the offspring is totally different from the parent one. Okay. Next, we have the difference between sexual and asexual reproduction. In asexual reproduction, only one parent is involved. In sexual, both the parents are involved. In asexual, unisexual flowers occurs. सेक्सुअल में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. असexual reproduction लोअर प्लांट्स में होता है. सेक्सुअल reproduction हायर प्लांट्स में होता है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं होते, सेक्सुअल में प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे ओरिजिनल जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है पेरेंट, वो डिसअपियर कर जाता है, बट यहाँ पे मेंटेन रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता असेक्सुअल में, बट सेक्सुअल में होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली डिफरेंट होते हैं सेक्सुअल में, बट असेक्सुअल में टोटली सेम होते हैं. यहाँ पे कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होती है, बट सेक्सुअल में सीड फॉर्मेशन होती है. दैट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. नेक्स्ट आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाते एक फ्लावर के, दैट इज द मेल एंड द फीमेल दैट हैव बीन शोन ओवर हियर. Male reproductive part is your stamen, that is anther and filament. Next we have the female reproductive part, that is a pistil, which contains stigma, style and ovary and ovule. Next we have question number 6. Explain the difference between self pollination and cross pollination. आपको self और cross के बीच में difference बताना है. Self में pollen grains are transferred to the stigma of the same flower, but cross में carried to stigma of another flower.
Next occurs in bisexual plants having anther and stigma maturing at the same time. ये सेक्शुअल बाइसेक्शुअल फ्लावर्स में होता है जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं. क्रॉस में ऐसा कोई ऐसा सच ज़रूरी नहीं होता. ओके, इट कैन बी एट डिफरेंट टाइम्स. सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स इन वीट, पीज एक्सेट्रा. क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन लेडी फिंगर, टमाटो एंड ब्रिंजल. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स. कैसे होता है. फर्स्ट इट डेवलप्स अ पोलन ग्रेन, reaches the stigma of a flower, then वो pollen tube जनरेट करता है. ये pollen tube धीरे धीरे ओवरी तक रीच करती है, then ओवरी पे जाके बर्स्ट करती है, pollen रिलीज करती है, एंड देन वो फ्यूजन होती है मेल एंड फीमेल गैमेट की, एंड देन वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है. अब ये जाइगोट बाद में डेवलप करता है एम्ब्रो के अंदर, एम्ब्रो देन सीड्स एंड देन इनटू अ फ्रूट. तो व्हेन द pollen grain reaches the stigma of the same species flower, it starts growing out into the pollen tube of the stigma. This tube continues to grow inside the style till it reaches the ovule. Male cells are released into the ovule for the fertilization with the female egg cell, and thus the zygote is formed. After this process of fertilization, the ovary develops into a fruit and the ovule into seed. I hope question number 7 is clear to you. Next we have question number 8. Describe the various ways by which the seeds are dispersed. कैसे कैसे डिस्पोज होंगे. By wind, by water, by air, by other organisms. The first one, some light seeds like that of mother, which are hairy seeds and dry हैं, they are carried away by wind. अब कुछ spiny seeds हैं, so like xanthium and urena, they sticks to the parent body or the animal, तो वहाँ पे animal ऐसे carrier की तरह बन जाते हैं. नेक्स्ट हैवी सीड्स हैं कोकोनट की, तो वाटर करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, और अगर फ्रूट बर्स्ट कर जाता है उसमें जो सीड्स हैं वो बर्स्टिंग के थ्रू डिस्पर्स कर जाते हैं. नेक्स्ट मैच द कॉलम्स आपको मैचअप करने हैं. कॉलम 1 एंड कॉलम 2, द आंसर इज बीइंग शोन इन द करेक्ट ऑप्शन. बट इज फॉर ईस्ट, eyes in potatoes formation, fragmentation is seen in Spirogyra, wings in maple, spores formation in veg mold. I hope the matchup is clear to you. Next we have question number 10. आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है. The first one, the reproductive part of a plant is leaf, root, stem, flower. The correct answer is flower because it contains your male reproductive part and the female reproductive part. Next, the question number B, the process of fusion of the male and female gamete is called. Male and female gamete के fusion को क्या बोलते हैं? That is fertilization. Next, mature ovary forms. ovary क्या form करेगी? Seed. नहीं, ovary क्या form करेगी? Fruit. ओके. नेक्स्ट, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट. स्पोर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट कौन सा है? रेड मोल्ड, क्योंकि जिंजर में बर्ड होता है, रोज में लेयरिंग ग्राफ्टिंग होती है, एंड पोटैटो में आई फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट वी हैव ब्रायोफाइलम कैन बी रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स. नॉचेस के थ्रू ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस करता है. दैट इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. सो एट दिस पार्ट द chapter is over. Reproduction in plants is over. And if you have any doubt regarding this chapter, you can contact me. That's all for today. Thank you and have a nice day.